क्योंकि मुझे जो जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है एज एन जी एक्ट्रेस, आप बहुत चूजी हैं। जी आपने भी जिक्र किया कि मैंने वो फिल्म की थी, ये सिंगल पहली बार किया। जी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वो द रीजन बिहाइंड इट, एंड दो इट इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड, हाँ पीपल आर लविंग इट। yeah. So what is your question? माय What took क्वेश्चन me इज, so long for हाँ me वो to do? किस और दैट I, टू अ सिंगर, फिल्मों yeah, का तो आई अंडरस्टैंड, आई कैन बाय दैट। yeah. No, I think I don't know. There's no particular reason. It was not like a thought of thing to not do a single. I think maybe I was approached earlier also for a few songs. Sometimes your sensibilities don't match. Sometimes you don't like a melody. Maybe you like the lyrics, and sometimes you like the melody and not the lyrics. So, like you said, I pick and choose a lot. When I heard it, I found what I liked when I heard the song for the first time was it was so much fun. Like I felt very happy, and that was one reason. And I also heard that Shazia and Piyush were going to be choreographing it, and for me it makes a lot of difference who's behind it all, who's the mind, and who's directing it, and who's the choreographer. And I've always wanted to work with them. They're all of 23-year-old and 24, 23, and they're doing some amazing work and great dancers and choreographers. And when I went, and the same thing happened there. The way they choreographed it was very, very, very simple yet very twisted in some places. So it just to pick up those nuances, it took me like a day or two. So yeah, that's the reason. अच्छा, उसके अलावा जब मैं पतली कमरिया की बात करता हूँ तो कैप्शन ही अपने आप में एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है। उसके लिए फिजिकली बहुत काम करना पड़ता है कि आपको वर्कआउट वगैरह करना पड़ता है कि उस बात को, उस लफ्ज को मैच करना है। उसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? Actually, honestly, bolu, I'm really, I've always been very blessed in that. When it's about the fitness, and I believe that I am a disciplined person. So, जो मेरा everyday yoga होता है या meditation होता है या my food habits, they are how they are forever. Like now, I can't even remember from the time that I have been doing all my sadhana, and also I have lots of injuries, so I have to kind of work with it. Which is why it's a very conscious thing, because I know कि मैं जिम गई या फंक्शनल ट्रेनिंग किया तो मुझे फिर से कोई ना कोई इंजरी हो सकती है. सो एवरीथिंग इज़ वेरी चार्टेड आउट, एंड अब वो मेरे स्केड्यूल में बैठ गया है कि मॉर्निंग में उठो और 2 घंटा अपने आप को दो. So when a song like this comes up, and when I know that probably I have to wear certain clothes that will show my midriff, all I have to do honestly is stop carbs for 10 days or 7 days. Like I am not how I was in the song now, and that's absolutely all right. You can't be how you're supposed to look in a song or in a particular project in your everyday life. It's not possible. So jitna ho sake up, you can never be perfect. So whatever, how much ever perfection you can achieve for a certain project, I try to do that. क्या इतनी उम्मीद की थी, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा? बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है, बहुत सराहा है, और आपकी ये खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक फैन फॉलोइंग है जो आप इंतजार करते हैं कि कब कुछ आपकी तरफ से आएगा। जी नहीं, देखिए, अगर मैं इसकी कोई भी, इफ आई से एनीथिंग एल्स, बट व्हाट इज एक्चुअली द फैक्ट which will be that I actually do my work, and I actually I've been studying the Gita for a very long time now, almost 2 years, every week. In fact, tomorrow is my next Gita class. It says karmanyevadikarastu ma phaleshu kadachan. It is not, it's just so bizarre that when you do something and you actually don't have any attachment to the results, you will find yourself way happier and freer and carrying less baggage, a lot less baggage, which is what I have also realized. Because हाँ, obviously मुझे excitement भी उतनी है, nervousness भी उतनी है, पर मैं जो नहीं कर रही हूँ consciously, मैं सिर्फ एक बार गई हूँ जब से सॉन्ग रिलीज़ हुआ यूट्यूब में देखने के लिए, वो भी आई थिंक 2 घंटे आफ्टर द सॉन्ग रिलीज. आफ्टर दैट मैं जा ही नहीं रही हूँ. मुझे ऐसा है कि ये मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मुझे जितना भी प्यार मिलेगा उतना मैं बटोर लूँगी. रेस्ट ऑफ इट उसका कोई मतलब ही नहीं है. बट लाइक यू सेड, पीपल आर वॉचिंग इट, पीपल आर गिविंग मी दिस सॉन्ग. In fact, more than me, I think it's the audio is very, very strong, and Tanishq and Sukhi ji are so good. So it's a collaborative process. It's not just me. It's our director, my entire team, our choreographer. So I think we all are getting a lot of love, which is very, very nice and overwhelming. ब्रह्मास्त्र भी रिलीज की कगार पे है और इतना सब कुछ हो चुका है. मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अयान मुखर्जी?
Oh my God, he is a brilliant mind. He's all heart, and I think he's given this project his life. If I remember right, remember him telling me he's been working on this for 7-8 odd years. This project, from the time he thought of it and then he wrote. So yeah, I think I'll speak more about it when the film is on release. But yeah, he's a God's child. He's God's one of the most favorite children for sure. Ranveer and Alia. They're fire on screen and they're beautiful human beings on set. So I feel very lucky, you know, on that particular project. I got a chance to work with Nagarjun sir and obviously Mr. B sir, the greatest. Oh my God, I can't forget that day. Shah Rukh sir. So it's just, Dream come true. yeah. dream you never think will come true. Okay. It's almost like that. Moni Confidential London. जी, London Confidential, yeah. उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? It was something that came to me during a pandemic, and I don't know if it was my answered prayer or not. It was very, very long, and you know, things were getting pushed. A lot of things have gotten canned as well. 2-3 projects that I was doing last year, and because of the COVID situation, I got that project, and I thought, you know, it was a meaty role. So, I mean, I was there in London summers, shooting in the London outdoors, in the main city. I mean, can't be anything better at that point of time. आखिरी 2 सवाल. जी. एक सेलिब्रिटी होने के बहुत से फायदे हैं और जी. क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, बहुत से नुकसान भी जी. हैं. आपका इसके बारे में क्या कहना है? What's your point on that? मैं इसके बारे में सोचती ही नहीं हूँ, इज़ व्हाट आई हैव टू से, क्योंकि देखिए, आप एक सर्टन हम सब एज इंडिविजुअल्स अपनी चॉइसेस मेक करते हैं. वी चूज समथिंग फॉर आवरसेल्व्स. एज एक्टर्स, आई थिंक वी आर वेरी वेरी लकी टू बी डूइंग व्हाट वी एब्सोल्युटली लव डूइंग. यू नो, यू विल नेवर हियर एन एक्टर सेइंग कि आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू द सेट अनलेस यू आर अनवेल. So, you know, when we are in a process like that, everything comes with certain responsibilities, certain baggages, certain positive and negatives. You can't treat it like that. You have to treat it like a part and parcel of your life. And I think what is most important in every profession is to kind of focus on yourself and be responsible for your surroundings, because that is the only way you can function and move forward. Because if you're looking inwards and in your own life and try to make your own immediate environment better, that's all you can really do. You know, nothing is, you can't do anything else other than that. क्योंकि आउटसाइड जो बाहर के कंडीशंस होते हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल वैसे भी नहीं होता. सो जो पॉजिटिव्स या जो नेगेटिव्स है आपको उसी तरह से डील करना पड़ता है. ये एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जब हम यू नो low phase. Yeah, low phase, when we have you know, anger, frustration, you know, sadness, anxiety, all this is a part of our daily lives, especially people living in a metropolitan city or something. So, you know, you need to quickly also know that they are these unwanted guests in your life. They'll come and go, and you kind of deal all the negatives of the profession also like the same way. ये गीता का आपने जिक्र किया, शुरू से रहा है ये शुरू से? मैंने बचपन में पढ़ा था पर मुझे समझ में नहीं आया था इतना ज़्यादा. बट दिस गीता भगवत, वो गीता का सार पढ़ा था आई थिंक मैंने. ये पतली किताब होती थी, मुझे याद है. पूजा करके सुबह सुबह मॉम बोलती थी पढ़ो, तो हम पढ़ते थे लिटरली, लाइक संस्कृत लाइन और ट्रांसलेशन. Last 2 years back, my best friend, my childhood friend in fact, she lives in Abu Dhabi, she started studying it. And Mataji or Prabhu, Shweta Mataji or Rahul Prabhu, they are amazing. They are both professors and they're doing it just for seva. So I also joined the group right before the lockdown. But अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है. बट जिस वक्त मैंने शुरू किया था, मैं क्लासेस कर नहीं पाती थी क्योंकि उस वक्त शूट चल रही थी नॉन स्टॉप. तो कभी कभी वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे देती थी. बट ड्यूरिंग द एंटायर लॉकडाउन आई वाज वेरी रिलीजियस, एंड या एवरीबडी, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल करिकुलम. I genuinely feel it more than a religious book. It is not just a religious book. It's life का सार. Everybody, it's eternal knowledge and it's basic knowledge. आप कोई भी क्वेश्चन खोल के गीता, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, उसका पूरा का पूरा सारा आंसर है. अब तो आप ये कहने जा रही हैं कि भगवत गीता को भी स्कूल करिकुलम में होना ही चाहिए. और बचपन से अगर एक कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ग्रास रूट लेवल पे इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे थोड़ा बहुत मेडिटेशन, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज एवरी डे की, आपके माइंड को उतना ही स्वस्थ रखने के लिए.
मेंटल हेल्थ पे जो हम इतनी सारी डिबेट करते हैं, आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम very very early age, so that you kind of know the difference between, even if you're getting some negative thoughts, what to do about it, which doesn't lead to something that has gone very very bad, or you know, that needs real help. So last one. Do you think that there's a need of Bhagavad Gita, as you said rightly, very rightly you said just right now, जिस माहौल में बॉलीवुड स्टार रहते हैं, प्रेशर, कंपटीशन, कोई आगे, कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, 100 क्लब, 100 करोड़ क्लब, ब्ला ब्ला, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में बड़ी ज़रूरत है कि जितना हो सके, क्योंकि वो जिंदगी जीने का तरीका बताती है? मोस्ट डेफिनेटली, पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि पूरे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इफ़ यू थिंक अबाउट इंडियन फैमिलीज, जितने सारे हमारे बैरियर्स हैं, जितने सारे हमारी रूढ़ी थॉट प्रोसेस है, लाइक यू नो, वी टॉक अबाउट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट बेटा पढ़ाओ, एंड इफ you make him understand a certain thing. So I think the society is in the need of this knowledge, or this I don't know, the basic things that people need to be aware of. We are not aware. We're literally living in ignorance, and we actually come from a country of all the Vedas and Upanishads, and we don't do anything. We're sitting on a pile of gold mine and we don't do anything about it. So to answer your question, yes, most definitely, you know, entertainment industry is a place where it's a very very stressful place. You don't have a concept of real Saturday Sunday. You don't have a concept of 9 to 5 job thing. We are constantly consumed in our own minds and thoughts, for sure. But having said that, even the rural India, even the you know, different, like all, whether it's you know, the villages, or yeah, or the towns or the cities, we all are in dire need of what Bhagavad Gita teaches. अब मैं खत्म कर रहा हूँ अपना, और फिर लोग आके बोलते हैं कि आपको रिप जीन्स पहननी है, आपको कटी जीन्स नहीं पहननी है. हाँ, फिर लोग आके ये भी कहते हैं, हाँ, स्टेट कम्स एंड सेज कि लड़कियों को ये नहीं पहनना, और ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं. True. What is your question? The CM said recently. No, I'm not getting into that. चलो ठीक है.